everyone, welcome back to my channel. Previous class रे हमें discussion करथिले कि what is the Archegoniates, introduction about the Archegoniates. In the next part, it is about the unifying features of Archegoniates. हम पढ़िथिले कि Archegoniates under रे हमरा Bryophytes, Pteridophytes and Gymnosperm जाउची. तो what are the unifying characters that define the Archegoniates? से विषय रे हमें आज पढ़िबा को जिबा. So it is the first slide. Second slide is meaning and history. किए आपको देइथिले कोन आरो हिस्ट्री अछि आर्किगोनियट्स तो पुनी के तो देइथिबे ना तो सो किए देइथिले तार कोन हिस्ट्री अछि से सब होछि मीनिंग एंड हिस्ट्री इन द सेकंड स्लाइड. The first कोन अछि the term archegoniates was proposed by Ivan Nikolaevich Gorozhkin in 1876. एटा को पूरा मन रखिबो कि एटा इम्पोर्टेंट कि ना तमर एग्जाम रे आसीबार तो इवन निकोलोविच गोरेक इन 1876. सो मुझे हाईलाइट कर दिए ताकू. Okay. The word Archegoniates is derived from the presence of a female reproductive structure called the Archegonium. Previous class रे हमने सया ही पढ़ी थिले कि Archegoniates words एथे पई आसुचे कि Archegonium the female reproductive structure Archegonium अछि बोले के आ सेतरे इंक्लूड होचे हमरा Bryophyte, Pteridophyte and Gymnosperm. Then what is the evolutionary origin? कोठु से फॉर्म हेची जेमिति ह्यूमन इवोल्यूशन हेची इवोल्यूशन बाय इवोल्यूशन हमें फॉर्म हेचे एडवांस फॉर्म ऑफ ह्यूमन सेमिति आर भी तो कोठु इवोल्यूशन हेथिबा ना आर की एंसेस्टर थिबे ना तो अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल व्यू archegoniates are considered to have evolved from an aquatic green algal ancestor. The most of the aquatic green algae ru a form hechi or the presence of an important step evolution of plants from aquatic environment towards the life on land. तो जेतबेले से aquatic algae तार ancestor then से कोठी ताहले ग्रो करिथिबो वाटर रे वाटर रु केमिते लैंड हैबिटेट ट्रांजिशन हेची सेटा हमर ए आर्केगोनियट्स रे हमें पढिबा ब्रायोफाइट्स टेडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म रे हमें पढिबा. ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन प्लांट डेवलप सेवरल एडाप्टेशन ट्रांजिशन टाइम रे बहुत सारा एडाप्टेशन को से निज भीतर को आनिबा तो एडाप्टेशन दैट हेल्प द सर्वाइव इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट. तो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट रे को एडाप्टेशन को से निजे अडॉप्ट करिछि जा फल कि से सर्वाइव हेछि से सब तमरा इवोल्यूशन ऑफ ओरिजिन ने आसीबो. देन इन द नेक्स्ट स्लाइड आर्केगोनियट्स traditionally defined embryophytes. आमे ताको embryophytes को archegoniates को. Why archegoniates is called embryophytes? Because it form embryo after fertilization they produce embryo. Okay, zygote fertilization हबा then zygote हबा zygote से embryo formation हबो. So सेति पई आमे ताको कोन कहूचे embryophytes बोलिका. The archegonium is multicellular reproductive structure. It contains a single egg cell. आगुरु भी पढ़िथिले प्रीवियस क्लास रे कि आर्केगोनियम थिला तमरा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर. तो मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होची आर्केगोनियम आ ई कंटेन करूची सिंगल एग सेल गोटे ही एग सेल कैरी करूची. तापरे हम देखिबा स्ट्रक्चर ऑफ आर्केगोनियम. देख ये मु कि तार फिगरटा कि आर्केगोनियम रो फिगर आ ये हमें पढ़िबा कि कौन कौन स्ट्रक्चर रे कौन कौन प्रेजेंट अछि आर्केगोनियम रे. ओके तो a typical archegonium is multicellular flag shaped structure. ये होची कौन एठी देखो ये कौन होची multicellular आउ flag shaped structure. flags तो देखि दिबो तो flag shaped structure. It consists of two main region गोटे venter and neck. देखो एठी venter canal cell एठी venter आउ ये neck ये venter neck ये होची venter. तो ये कौन करछि दीटा important main region अछि गोटे छै venter cell आ गोटे छै neck canal cell. The swollen basal portion of the archegonium called venter जोटारे basal portion ने जो swollen है कि अछि
ताकू आमे कौन कहबा वेंटर इटी देख जो स्वेलेन है कि अच्छी ताकू आमे कहबा वेंटर द elongated upper portion is called neck जोटा elongated है कि अच्छी ताकू आमे कहबा neck the venter contains a single egg cell एठी venter contain करिछि egg cell देखो एठी अछि venter contain करछि egg cell it also contain a venter canal cell in many archegoniad plants the neck contains one or more neck canal cell the neck canal cell generally degenerate when the archegonium becomes mature तो मोस्ट ऑफ दी कौन कहला कि दीटा मेन रीजन अछि गोटे वेंटर गोटे नेक सेल तो वेंटर केनाल सेल टा बेसल ले अछि वेंटर सेल टा नेक सेल टा होचे अपर पार्ट रे अछि अपर पर्सन रे वेंटर कैरी करूचे वेंटर केनाल सेल नेक कैरी करूचे नेक केनाल सेल आल्सो वेंटर कैरी द एक सेल तो जेतेबेले तमर द नेक कंटेंट्स वन और मोर नेक कैनाल सेल एट देखो नेक कैनाल सेल अछि जोटा कि तमर बहुत सारा वन हले बहुत सारा भी सेल रहि परबो नेक कैनाल सेल नेक कैनाल सेल केते बेले डिजेनरेट हबो ना जेते बेले आर्किगोनियम मैच्योर हबो से टाइम रे तमर नेक कैनाल सेल डिजेनरेट हबो नेक कैनाल सेल डिजेनरेट हेले तो तमर मेल गैमेटोफाइट ता भीतर को एंट्री करबा ना हमें सेटा धीरे धीरे जानिबा हैला ओके बुझि पारले बे देन इन द नेक्स्ट स्लाइड यूनिफाइंग फीचर्स ऑफ आर्केगोनियट्स कौन आमर यूनिफाइंग फीचर्स अच्छे आर्केगोनियट्स तो मोस्ट ऑफ देम कहले कि आर्केगोनिया डिवाइड होइचे ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म रे तो आर्केगोनिया होची फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट पार्ट को हमें कहूचे बट ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स से सेटा देखा होचे आर्केगोनियम बट इन जिम्नोस्पर्म रे किछ एक्सेप्शनल केस अछि जोतरे कि आर्किगोनियम टा ट्रेडिशनली प्लेस हैनी है राइट ये मु लिखी थी द आर्किगोनियम मे बी एब्सेंट इन सम मेंबर्स दैट ट्रेडिशनली प्लेस अंडर द then male sex organ the male sex organ is called the antheridium female sex organ को हमें कौन कहिथिले आर्केगोनियम मेल सेक्स ऑर्गन कौन कहबा आंथ्रेडियम आंथ्रेडिया प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स आंथ्रेडियम हमें सिंगुलर कहले आंथ्रेडिया हेले प्लूरल तो आंथ्रेडिया कौन करूची मेल गैमेट प्रोड्यूस करूची इन मेनी आर्केगोनियट्स द मेल गैमेट आर फ्लैजेलेटेड हेला मेल गैमेट टा होची फ्लैजेलेटेड बाइफ्लैजेलेटेड मेल गैमेट्स टा because they possess flagella these male gametes are capable of movement flagella काहेकि कैरी करछि ना मूवमेंट करबो गोटे जेतेबेले मेल गैमेट टा प्रोड्यूस हे जिवो सेतेबेले तमरो मूवमेंट करके फीमेल गैमेट पाखु जिवो जोटा को हमें देखि दिले प्रीवियस स्लाइड रे कि एठी तमरो कोन नेक कैनाल सेल डिजेनरेट हबो आ थ्रो रे तमरो कोन आसीबो मेल गैमेट आ भीतर एंट्री करबो सो से तो कैरी करथिबा फ्लैजेला ना मूवमेंट करि पारथले तो आ भीतर एंट्री करबो सो दे कैरी द फ्लैजेला ओके तापरे नेक्स्ट स्लाइड हम देखिबा alternation of generation what is alternation of generation होची sporophytic generation या gametophytic generation जेतेबेले नेम रो तमे जानि पारुछ कि sporophytic generation माने sporophyte प्रोड्यूस करिवो gametophytic generation माने gamete प्रोड्यूस करिवो जो हमें पढिले कि ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म तीनटा जो पार्ट अछि तो कोथिरे किए डोमिनेंट कैटेगरी अछि फॉर एग्जांपल ब्रायोफाइट रे sporophytic generation dominant कि gametophytic generation dominant टेरिडोफाइट रे sporophytic generation dominant कि gametophytic generation dominant as same as in the gymnosperm so सेटा जानिबा पई हमें कहले हमें पढिबा कोन alternation of generation जोटा कि unifying features of archaeogoniates रे जाउची देखो there is an alternation between two distinct generation in the life cycle the first is the gametophytic generation which produce gametes जोटा कि मु कहली gametophytic generation जे gamete produce करिवो ताको हम gametophytic generation कहबा second होची sporophytic generation जे produce करिवो spore हम ताको कहबा sporophytic generation so the life cycle alternate between a gamete producing phase and the spore producing phase गोटे gamete producing फेज सहित गोटे स्पोर प्रोड्यूसिंग फेज सहित अल्टरनेशन करूची बोली ताको हमें कोन कहले अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ओके however the dominance of these two generation is not the same in all archegoniates meaning bryophyte टेरिडोफाइट and gymnosperm ई तीनटा करे माने न कि जे फर्स्ट हमरो गैमेटोफाइटिक आसीबो तापर स्पोरोफाइटिक आसीबो सेमानक भितर डिफरेंस अछि तो कोन डिफरेंस छै हमें देखिबा in bryophytes the gametophytic generation is the dominant phase of the life cycle
इट इज द इम्पोर्टेंट तमन जेतेबेले 1 मार्क क्वेश्चन आसीबो सेतेबेले इधर आसीबो ब्रायोफाइट्स रे कोन होची डोमिनेंट फेज होची तमरा गैमेटोफाइटिक जनरेशन दीटा जनरेशन पढिले हमें गैमेटोफाइटिक जनरेशन एंड स्पोरोफाइटिक जनरेशन त ब्रायोफाइट रे गैमेटोफाइटिक जनरेशन आसीबो तापरे तमरा स्पोरोफाइटिक जनरेशन आसीबो ओके in the green independent plant that we normally see is the gametophyte जोटा हमें देखिबा ब्रायोफाइट सेतेबेले हम पढिबा रिसिया मार्कान्सा फ्यूनारिया सेतेबेले देखिबा जो प्लांट हमर ग्रीन आउ इंडिपेंडेंट प्लांट जोटा अछि सेटा मोस्ट ऑफ दी सेटा होछि हमर कोन गैमेटोफाइटिक जनरेशन तापरे गैमेटोफाइट को डिपेंड करी कि ब्रायोफाइट रे स्पोरोफाइटिक जनरेशन फॉर्म हेछि एट देखो इन स्पोरोफाइट डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड रिमेन अटैच्ड टू द गैमेटोफाइट तो आफ्टर फास्ट तुम्हारा गैमेटोफाइटिक जनरेशन हम गैमेट प्रोड्यूस हम फर्टिलाइजेशन हो सारा पर एम्ब्रियो डेवलप हम एम्ब्रियो पर देन तुम्हारा स्पोरोफाइटिक जनरेशन हम को कंडीशन है ब्रायोफाइट्स कंडीशन तो टेरिडोफाइट कंडीशन में कौन देखिबा इन टेरिडोफाइट्स द सिचुएशन इज डिफरेंट द मैच्योर स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट आर जनरली इंडिपेंडेंट प्लांट्स द लार्ज लीफी प्लांट दैट वी कॉमनली ऑब्जर्व इन पॉन्ड्स इज द स्पोरोफाइट हेले ब्रायोफाइट्स रे हमें जोड़ा देखिले कि लीफी प्लांट जोड़ा हमारा फॉर्म हेची सेटा होची गैमेटोफाइटिक बट इन टेरिडोफाइट्स कंडीशन जोटा लीफी प्लांट्स अछि ताको हमें कोन कहले स्पोरोफाइटिक कंडीशन द गैमेटोफाइट यूजुअली स्मॉल स्ट्रक्चर सच एज प्रोथैलस इन मेनी फॉर्म्स प्रोटोनेमा स्ट्रक्चर तमरो देखा जिवो ब्रायोफाइट्स रे प्रोथैलस स्ट्रक्चर देखा जिवो तमरो टेरिडोफाइट्स रे सो फास्ट तमरो डोमिनेंट फेज होची स्पोरोफाइटिक फेज तापरे तमरो गैमेटोफाइटिक stage in pteridophytes तब नेक्स्ट आसीबो इन जिम्नोस्पर्म ब्रायोफाइट्स गला टेरिडोफाइट्स गला जिम्नोस्पर्म रे इन जिम्नोस्पर्म द गैमेटोफाइटिक जनरेशन इज हाईली रिड्यूस्ड जिम्नोस्पर्म को आउट के प्लांट हमर डेवलप हे गलानी टिके इवोल्यूशन हे गलानी तो सेठी कोन होबा ना हाईली रिड्यूस्ड हे जबो के गैमेटोफाइटिक जनरेशन द गैमेटोफाइटिक आर वेरी स्मॉल आर डिपेंड ऑन द स्पोरोफाइट ता गैमेटोफाइटिक फेज ता जो सेटा स्मॉल फेज देखा जिवो आ से डिपेंड होबो कहा ऊपर स्पोरोफाइट ऊपर ऑन द अदर हैंड द स्पोरोफाइटिक प्लांट इज लार्ज वेल डेवलप्ड एंड इंडिपेंडेंट एथिरे भी तमरा सेम स्पोरोफाइटिक प्लांट लार्ज वेल डेवलप्ड आउ इंडिपेंडेंट होबो तो देयरफॉर स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज क्लियरली डोमिनेंट इन जिम्नोस्पर्म बुझी पारलो ब्रायोफाइट रे तमरो डोमिनेंट फेज होउची कि गैमेटोफाइटिक स्टेज टेरिडोफाइट रे बोथ स्पोरोफाइटिक फेज टा ही मोस्ट ऑफ दी तमरो डोमिनेंट तार दीटा कंडीशन आसीबा स्पोरोफाइटिक टा डोमिनेंट ता ऊपर इंडिपेंडेंटली तमरो प्रोड्यूस होची गैमेटोफाइटिक आ जिम्नोस्पर्म कंडीशन ने आसीबा तमरो कोन कि तमरो स्पोरोफाइटिक जनरेशन होची डोमिनेंट आ गैमेटोफाइटिक जनरेशन होची स्मॉल और इंडिपेंडेंट अपन सॉरी डिपेंड अपन स्पोरोफाइटिक जनरेशन नेक्स्ट आसीबो कोन एम्ब्रियोफाइट्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड मैट्रोट्रॉफी गोटे नुआ टर्म सुनी थिबा मैट्रोट्रॉफी न्यूट्रिशन हैला मैट्रोट्रॉफी नुआ टर्म डाटा मोटा को पूरा एक्सप्लेन करबी मैट्रोट्रॉफिक कौन मैट्रोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशन इन नेचर इन मैट्रोट्रॉफिक नेचर इन न्यूट्रिशन तो सेटा मु कहबी तो फर्स्ट स्टार्ट करिए आर्किगोनिएट्स आर एम्ब्रियोफाइट्स व्हिच मीन्स the zygote develops into a multicellular embryo मु कहितली कि जेतेबेले तमरो कोन हबो फर्टिलाइजेशन हबो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जेतेबेले जाइगोट फॉर्मेशन हबो देन जाइगोटा डेवलप हबो गोटे मल्टीसेलुलर डिवीजन को मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो को आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डज नॉट डायरेक्टली अंडरगो मेयोटिक डिवीजन इंस्टेड द जाइगोट अंडरगो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन आमे पढ़ी कि ह्यूमन केस रे नॉर्मली देखो कि जेतेबेले हमें फर्टिलाइजेशन होची जाइगोट फॉर्मेशन होची देन मेयोटिक डिवीजन होची बट एई कंडीशन ने कोन हबो ना फर्टिलाइजेशन हबो जाइगोट फॉर्मेशन हबो से मियोटिक डिवीजन संगे संगे न करके माइटोटिक डिवीजन करिवो माइटोटिक डिवीजन करके एम्ब्रियो फॉर्मेशन करिवो हैला ए लिखा इज दैट माइटोटिक डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एम्ब्रियो ताको हमें एम्ब्रियो बोली कहबा दिस एम्ब्रियो लेटर डेवलप इन द स्पोरोफाइटिक जनरेशन तापरे से कोन करिवो स्पोरोफाइटिक जनरेशन करिवो ओके एटा होची तमरा कोन एम्ब्रियो डेवलपमेंट केमती होची देन आसिला कि आउ गोटे इंपोर्टेंट कहली कि मैट्रोट्रॉफी तो व्हाट इज मैट्रोट्रॉफी means the developing young embryo receive nutrition from the maternal parent ह्यूमन केस रे कोन होची ह्यूमन केस रे भी जेतेबेले गोटे बेबी जेतेबेले तमरो मार मदर रो
ओम रे रहुची सेतेबेले किए ताकू न्यूट्रिशन दउची मदर सेम इन कंडीशन ऑफ प्लांट रे भी तमर मोस्ट ऑफ द मैटरनल पेरेंट माने मदर ही ताकू एम्ब्रियो को डेवलप करिबारे मदर ही न्यूट्रिशन दब द प्लांट और एनिमल कंडीशन सेम ओके तो सेथि पई आमे ताकू कहले मैट्रोट्रोफी न्यूट्रिशन इन अदर वर्ड्स द यंग एम्ब्रियो डिपेंड्स ऑन द मैटरनल गैमेटोफाइटिक टिश्यू फॉर इट्स न्यूट्रिशन ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट टाइम रे मैटरनल उपरे डिपेंडेंट हब गैमेटोफाइटिक जनरेशन जोड़ा कि तुम एम्ब्रियो मोस्ट ऑफ द डिपेंड रहिबो कि ताको फूड दरकार वाटर दरकार जो सब दरकार जो जेती नीडेड जिंस से सब डिपेंड रहिबो तुमरा मैटरनल पेरेंट रे दिस न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल पेरेंट इज नोन एज मैट्रोट्रोफी बुझ पाले मैट्रोट्रोफी माने कोन कि जेतबे ए जो रिलेशन न्यूट्रिशनल रिलेशन बिटवीन एम्ब्रियो एंड द मैटरनल पेरेंट माने एम्ब्रियो और मदर जो रिलेशनशिप न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप को हमें कहले मैट्रोट्रोफी ओके देन आसबा हमें पिगमेंट्स एंड फूड रिजर्व पिगमेंट मोस्ट ऑफ द हमर क्लोरोफिल पिगमेंट एटा तो समस्त जानिछ जेहेतु से तमरा ग्रीन कैरी करूची मींस क्लोरोफिल पिगमेंट अछि द क्लोरोफिल पिगमेंट अच्छे माने से कौन करियो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कले फूड रिजर्व हिसाब रे के रहबो स्टार्च तो सेटा ही नॉर्मली प्लांट्स रे रुहे प्लांट रे तमर क्लोरोफिल पिगमेंट फोटोसिंथेसिस करके तमर प्रोड्यूस करे ग्लूकोज तापरे बॉडी रे चारि आड़ को छाड़े सुक्रोज फॉर्म रे किंतु स्टोर हे रहे स्टार्च फॉर्म रे सेम कंडीशन इन आर्केगोनिएट्स द ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म ऑल आर द प्लांट्स सो से माने भी से ही कंडीशन रखिबे कि से क्लोरोफिल कैरी करेंगे और स्टार होची से इम्पोर्टेंट रिजर्व फूड मटेरियल okay it is all about the unifying features of archegoniates so thank you all for your patience to listen my classes आउ जहार जदि किसी डाउट थिबो मते कमेंट सेक्शन में जणैबो कि कौन डाउट अछि कौन नहीं बोलिका आउ हाँ एई जो मो स्लाइड देखेली सब जाकर स्लाइड गुड़ाक ए सब स्लाइड तमर नोट पई इम्पोर्टेंट तमे इथरु चाहिए तमे नोट करि परिबो हेले नोट पई किछि असुविधा नहीं किछि प्रॉब्लम नहीं ए सब स्लाइड रे जहा अछि से सब तमे नोट रे लिखि परिबो ओके आउ जहा भी तमर डाउट हबो मते कमेंट सेक्शन में जणैबो मु सबरो डाउट क्लियर करिवि okay then thank you for this